Guys, good morning. What a wonderful day. It's raining here and it's so nice to be outside. And हमने छुट्टी ले ली है आज. So we are going to the center of the city and we will take you together and you will see one off day in our life. So first we are waiting for the bus. अगर रेन नहीं हो रही होती तो हम वॉक ही कर लेते. इट्स वेरी क्लोज टू आवर होम बट ठीक है फिर. सो वी आर इन द बस. हियर बसेस आर रियली ऑसम, सो क्लीन, सो डैम क्लीन. एंड आई हैव टेकन माई सीट. सो मैं अपनी सीट पे बैठ गई हूँ, मुझे ज़्यादा खड़ा होना पसंद नहीं है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट एट मैकडोनल्ड्स. सो दैट वाज द प्लान कि फर्स्ट हम ब्रेकफास्ट करेंगे मैकडोनल्ड्स पे एंड देन वी विल हेड टू आवर डेस्टिनेशन. एंड सो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में बहुत ही अच्छा मेन्यू मिलता है एंड वी लव दैट पैनकेक स्पेशली, और दैट्स माय फेवरेट. बट एंड यहाँ पे अच्छे हैश ब्राउन भी मिलते हैं इन द ब्रेकफास्ट मेन्यू. सो वो भी बहुत अच्छे होते हैं एंड द कॉफ़ी ऑब्वियसली. सो वी आर गोइंग. सो यहाँ पे सेल्फ ऑर्डर काउंटर्स हैं जो कि यहाँ हर जगह काफ़ी पॉपुलर है बिकॉज इट्स ईजी. यू कैन जस्ट सेलेक्ट योर ऑर्डर एंड प्लेस इट एंड डू द पेमेंट एंड दे कलेक्ट द ऑर्डर एट द काउंटर डायरेक्टली. लेकिन अभी एक छोटा सा हमें धक्का लगा बिकॉज वी आर 2 minutes लेट एंड द ब्रेकफास्ट इज क्लोज्ड एंड वी विल नॉट बी एबल टू ऑर्डर ब्रेकफास्ट एनी मोर. Oh my God. I have bribed Varun for this and now it is not happening. And now हम अपने लटके हुए चेहरे लेके we are going back. Burger King भी जाने का कोई फायदा नहीं है because they follow the same timings. So now we are going to a local कॉफ़ी शॉप. यहाँ पे काफ़ी अच्छी कॉफ़ी मिलती है एंड उसके बाद यहाँ पे बहुत ही लाइक इट्स वेरी लोकल प्लेस एंड आप बहुत इंजॉय करोगे लाइक द कॉफ़ी और टी एंड बटर टोस्ट. सो बेसिकली सिंगापुर में देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोस्ट जैसे कि काया बटर टोस्ट जो कि बहुत फेमस है यहाँ पे. मैंने भी फर्स्ट टाइम यहाँ ट्राई किया था एंड इट इज़ टेस्ट रियली डिफरेंट एंड रियली गुड. सो अब हम वही खाएंगे, द सिंपल फूड, क्योंकि और कुछ नहीं है. अब सब जगह लंच की तैयारी हो गई है तो यही है जहाँ पे यू नो हो पूरे दिन ये मिलता है. एंड सो yes, we are all set. So we are will be ordering the kaya butter toast. So there are a lot of non-veg options, but ये भी kaya butter toast में भी egg रहता है, but yeah, still it's okay. It's really good. And और ये bread को बहुत अच्छे से toast करते हैं, so that's the good part of it. And so हाँ, yeah, so we have ordered two sets of kaya butter toast, and as you can see, and it's so crunchy and crispy. Oh my god, I love an extra butter but ठीक है ये this is okay. And so Varun, please taste and tell how's it. Go for it, Varun. It's really good. So if you're in Singapore, I highly recommend this place. Heavenly Wang बहुत ही अच्छा है for have a light breakfast or quick snacks. So it's really good. And now we are at MRT station. So we are going to Raffles place. एंड मैंने एक बुक भी ले ली है, दो मैंने जो कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है बट या इट्स वेरी गुड टू कीप योर सेल्फ बिजी वाइल यू आर ट्रेवलिंग. And now we have almost reached Raffles. So see, we are in the center of the city, the most beautiful part of Singapore. And बहुत ही मज़ा आता है यार यहाँ पे आके. मतलब it feels very different. It feels really like different and बड़ा मस्त मस्त सा लगता है टू सी एवरीथिंग सो क्लीन एंड ग्रीन. और उसके बाद और अब सारे ऑफिसेज भी खुल गए हैं तो यू कैन सी लॉट ऑफ पीपल अराउंड. और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है मतलब ये इतनी सारे ऑफिसेज स्काई स्कैपर्स हैं और इतनी अच्छी तरह इतना इनका बिल्डिंग्स का एक्सटीरियर है. इट्स अमेजिंग. एंड नाउ वी हैव टू क्रॉस द रोड, सो वी हैव टू प्रेस दिस बटन. So the light will get green there and then we will cross together. Yay. And so we have finished our work. Now it's lunch time, so हम again पहुंच गए हैं La Pa Sat. So La Pa Sat is ultimate place to have food in Singapore because यहाँ पे आपको हर टाइप का फूड मिलेगा, whether it's
Vietnamese, Indian, Chinese, Japanese, Mediterranean, everything you will get here. And so it's really good. And if and आपने शायद अगर क्रेजी रिच एशियंस देखी है तो उसमें भी देयर आर स्निपेट्स ऑफ दिस प्लेस. सो एज यू कैन सी इट्स फुल ऑफ पीपल. ओ माय गॉड, मैं कोरोना से पहले यहाँ आई थी एंड इट वाज एम्प्टी एंड नाउ यू कैन सी पैर रखने की जगह नहीं है. माय गॉड. एंड इतना डिलीशियस है यहाँ का खाना, सीरियसली. बट ये थोड़ा मेरे घर से बहुत दूर पड़ता है तो वी डोंट कम इट फ्रीक्वेंटली, बट आज आए हैं तो वी विल डेफिनेटली हैव समथिंग फ्रॉम हेयर. सो सी हाउ पैक्ड इट इज. सो यहाँ पे हम कुछ इंडियन ही खाएंगे क्योंकि आई डोंट नो समहाउ आई लव इंडियन. सो यहाँ पे आई वॉज अमेज टू सी कि यहाँ पे 6 इंडियन शॉप्स थी डिफरेंट डिफरेंट एंड सबका खाना बहुत अच्छा था. कुछ सम आर प्योरली वेज, सम आर वेज प्लस नॉन वेज. सब कुछ मिलेगा यार, जो मांगना जो मन हो वो खाओ. सो हमने यहाँ पे पनीर विच इज़ माई अल्टीमेट ऑल टाइम फेवरेट, एंड देन उसके बाद दाल और वही पूरी थाली ली, पैक्ड. भाई मजा आ गया. कैन यू सी कितना सब कुछ है, पापड़, 3 सब्जियां, एंड इट्स फुल फ्लेज meal. And we got the space also, and we sanitize our hand, which is very much required. And after having a delicious meal, we came to this place called Food Fox. अब इतना अच्छा खाने के बाद डेजर्ट खाए बिना कैसे छोड़ सकते हैं, तो we came to have an ice cream. This shop has exotic flavors of ice cream, and it's very healthy as at the same time. So आइसक्रीम को हेल्दी बोल रही हूँ. ओके ठीक है. सो देयर आर मेनी ऑप्शंस एंड वी अल्टीमेटली हमने अपना फेवरेट फ्लेवर लिया, सॉल्टेड कैरमल. आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू बट वरुण वाज वेरी एडमेंट कि नहीं वही ट्राई करते हैं. तो ठीक है. ये हुक्स कॉफ़ी भी काफ़ी सही लग रहा है, बट ठीक है, समथिंग शुड बी लेफ्ट फॉर द अदर सम अदर टाइम. तो उसके बाद ये यू कैन सी हमने एक ही आइसक्रीम ली बिकॉज ऑलरेडी पेट काफ़ी फुल था एंड इट्स रियली डिलीशियस एज यू कैन सी फ्रॉम माई फेस. So now we are going to board the metro and go back home because घर पे जाके भी कुछ काम है जो ख़त्म करने हैं. सो या बाय बाय टू दिस अमेजिंग लोकेशन. एंड आज वेदर भी बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है बट या. सो वापस आते हुए मेट्रो एकदम खाली थी. सो वी गॉट द सीट्स, वी enjoy our ride, and finally we came to our station. So yeah, this is all about today. And so if you guys like the video and the vlog a random day in our life, so please like, share and subscribe for more vlogs. Bye.